Dear students, I am your biology teacher Mines ma'am. Welcome you all in the digital world. In the present scenario, due to severe pandemic disease COVID-19 spreaded all over world. Keeping in view the today's situation, we have to connect through digital technology. So students, be ready for your online classes. Take your pen and notebook and get ready to write and learn. Today we are going to start first chapter of class 12th biology, that is reproduction in organisms. This is your biology book and this is unit 6. Under reproduction, we have to cover first chapter reproduction in organisms. So students, now we are starting. Hello students. Today I am going to take reproduction in organisms for class 12 biology. First of all, you should know what is lifespan. Say, organisms take birth, they become young, old, and then die. So you can say from the birth of an organism to death represents its lifespan. Each and every organism has its own age, or you can say different lifespan. Means they survive only up to certain time period. So you can write the definition of lifespan. The period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. Now we make two columns. First of all, organisms, then their lifespan. First of all, we can take the example of butterfly. Its lifespan is 1 to 2 weeks. Means this butterfly only survives up to 1 to 2 weeks. After that, this butterfly dies. Rice plant. Three to 4 months. Rose 5 to 7 years. Crow 15 years. Cow 20 to 25 years. Banana 25 years.
horse, 60 years. Crocodile, 60 years. Dog, 20 to 25 years. Then fruit fly, 30 years. Elephant, 60 to 90 years. Parrot, 140 years. Banyan tree, 200 years. And tortoise, its lifespan is 100 to 150 years. So these are the organisms and these are the different ages of the organisms. So these organisms have different ages and they only survive up to certain time period. So students, tomorrow I will take next topic. Until then, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक लेने से पहले मैं आपको प्रीवियस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। तो लाइफ स्पैन क्या होता है कि इंडिविजुअल के जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का सफ़र, उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि बच्चा जन्म लेता है, यंग होता है, ओल्ड होता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जन्म से लेकर के डेथ तक की कहानी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। अब हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारे NCERT बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स के लिए सरवाइव करती है, यानी कि इसकी लाइफ स्पैन केवल 1 से 2 वीक तक का होता है। और राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, रोज़ प्लांट 5 to 7 ईयर्स। इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स की ये क्या होती है? एज होती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है सरवाइव करने का, और इसी को क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन।